And we are live today. Welcome to another episode of ARD live reviews, match reviews, whatever. Sorry you guys we weren't present here, but क्या करें इसके लिए क्या कहते हैं आना पड़ा हमें इसके लिए we had to make time. वैसे शुरू में दिल नहीं कर रहा था जिस तरह मैच जा रहा था, but okay. The men in green did give us a chance to wear the green proudly again. So, first of all, how are you, Husaina? How are you, Abyan? I'm, I'm good as well. Tum sunao? Oh, How's the match I'm for good. you? How are you? oh, damn. How was the match? How was the match? ये यार मैं सवाल तुम दोनों से ही ना पूछ लूं. How was the match? Husaina, how was the match? What are your initial thoughts on it? Okay, so I follow it through. like आधा जो मैंने देखा है वो ESPN क्रिकेट इन्फो पे देखा है, तो मुझे तो लग रहा था फेटा लग चुका है. बट आफ्टर जब हमने रन्स कंट्रोल किए 340 तक रोका था, वाज लाइक चेजेबल है. बट देन व्हेन बाबर गया, इमाम गया, वाज लाइक गई बस पानी में गई. नेट रन रेट भी नीचे गई, 2 पॉइंट्स भी गए. बट या इट वाज अब्दुल्ला एंड रिजवान पे तो भरोसा. अब्दुल्ला played a wild innings in a World Cup debut. Incredible. And Abyan, what are your thoughts on the match? Like क्या सीन चल रहे थे बैक एंड पे? मैंने देखा था तुम्हें अभी तक उम्मीद थी इन लोगों से, तो वो काम कर गई और तुमने मुझे रिप्लाई भी दिया था, वो भी मैंने देख लिया है. तो what are your thoughts यार? Yeah, starting off तो it was quite bad. Very मुझे जैसे मेरा दिन जा रहा था ना, वैसे मुझे लगा फास्ट बॉलर्स का भी दिन जा रहा है. And उसके बाद spinners also didn't have a great day as well at the start. But by the end of the innings, as Usama mentioned, they did try to pull them back, and they were successful. आखिरी 5 ओवर काफी अच्छे थे. तो उसके बाद फिर कुछ इंडिया के पिचेस का अभी तक हमें इतना आइडिया तो हो गया है कि यहाँ पे एनी स्कोर इज चेजेबल. तो 340 वाज लुकिंग चेजेबल. फिर वो शुरू वाला अच्छा, उसके लिए आई हैव अ वेरी फनी एनेक्डोट कि जब वो व्हाट्स द नेम ऑफ द बॉलर दैट गॉट बाबर आउट. हाँ, पथीरा मधुशंका Mas मधुशंका. Madhushanka. हाँ, तो ओके. मधुशंका के उसी ओवर में मैं सोच रहा था कि ये ही इज द टिपिकल टाइप ऑफ बॉलर जिस पे बाबर है ना कभी कभी आजकल आउट हो जाता है, जब उसका मतलब सेकंड टीयर श्रीलंकन पेसर थोड़ी बहुत इन स्विंग करते हैं, और बॉल भी जिस बॉल पे आउट हुआ है बाबर, उससे एक बॉल पहले मैं सोच रहा था कि बिल्कुल बेकार सी बॉल कराएगा ये और कोई बाबर विल फाइंड अ वे, और वो किसी तरह मतलब मैनिफेस्ट हो गया. तो उस वक्त थोड़ा लग रहा था, उस वक्त मुझे अपना ट्वीट पे तो जो मैंने किया था उसके बारे में मैं सोच रहा था कि उल्टा ना पड़ जाए. लेकिन उसके बाद बॉयज मेड अ रियली गुड कमबैक. अब्दुल्ला शफीक ऑलवेज लुक्ड द पार्ट, एंड मतलब इतने टाइम से वी बीन सीइंग हिम परफॉर्म इन द PSL फॉर पाकिस्तान T20s as well, or finally at the big stage in front of the world he was able to showcase his talent. So that was a really good feel good moment. And उसके अलावा रिजवान का तो क्या कहना. रिजवान ने समराइज कर दिया ना पूरा मैच वो एक लाइन में कि sometimes it is cramped, sometimes I'm acting. That was the best moment for सही me. कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो अभियान यार, सही कह रहे हो. बाकी ये था कि क्या कहते हैं इसको, मैच की तरफ आते हैं. सबसे पहले तो मैं बताता चलूं, दिस वाज द हाईएस्ट रन चेज इन क्रिकेट वर्ल्ड कप हिस्ट्री फॉर अस, एंड आई गेस ओवरऑल एज वेल ये हाईएस्ट रन All चेज over, था. लाइक ये all over. पाकिस्तान ने किया है, मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रही ये कोई ऑल्टरनेटिव रियलिटी है कि क्या सीन है. मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस चल रहा है. आई डोंट, मुझे नहीं समझ आ रहा. मैं अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये उन्होंने गेम डाल दी है. ठीक है, आई मीन लाइक Thing over here. मैं वही शुरू से बता रहा हूँ कि मुझे नहीं इन पे भरोसा था ऑनेस्टली, ये लोग कर जाएंगे. लेकिन अभियान को शायद शुरू से ही भरोसा था इन लोगों पे कि कर जाएंगे, एंड दे डिड दैट. तो You know, as Nasser Hussain said, they would lose to Netherlands, but they will end up winning the tournament. That describes जैसे जिम्बाब्वे से हम लास्ट ईयर T20 में हार गए थे, फाइनल खेल के आए. So that's the feeling that Pakistan cricket gives you. Nothing, anything is possible. Highest chase कर लेंगे, lowest score पे out हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल ऐसा है. पाकिस्तान टीम इज एज अनप्रिडिक्टेबल एज इट कैन गेट. लेकिन अब यार खुश तो हो गए हैं, बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं. और होता ये है कि यार खुशी के अंदर बहुत सारे जो गलतियां होती हैं वो दब जाती हैं, वो उनके बारे में फिर डिस्कस नहीं करता. तो बट वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स टुडे.
लेट्स कम टू बॉलिंग। और यहाँ पे मैं शुरू करूंगा जैन खान के कमेंट से ही, कि वो कहते हैं कि यार उसामा मीर डिजर्व्स टू प्ले। और जिस तरीके से हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं विद स्पिन, लाइक अभी मैंने एक ट्वीट भी देखी थी कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर्स का शायद स्पिन से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। ठीक है, तो लाइक व्हाट आर योर थॉट्स कि यार बॉलिंग के साथ क्या हो रहा है, आखिर क्यों इतने रन पड़ रहे हैं, पिच में कोई मसला है या बॉलर्स ही अपना मोजो थोड़ा खो चुके हैं? हमें आई मीन लाइक शाहीन का तो पता है कि उसको इंजरी का मसला था, उसकी मिडिल फिंगर शायद इंजर्ड है, बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट अभियान? यार स्पिनर्स का लेट्स स्टार्ट विद द फास्ट बॉलिंग। आई थिंक शुरू में भी आई थिंक हसन अली गॉट लकी विद दैट विकेट, बिकॉज वो भी बॉल थोड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और शुरू के 10 ओवर इन इटसेल्फ लाइंस एंड लेंथ्स आई थिंक वर द मेन इशू, like with the Netherlands match, they weren't bowling in the right areas for consistently enough to get to build pressure on Sri Lanka. और फिर ऊपर से कुशल मेंडिस also played very well. तो और जो उनके दूसरे ओपनर हैं आई थिंक निशान का जो है निशान का, that's how you pronounce his name. So he also played well. So yeah, I think it was a lack of consistency with the lines and lengths. और शाहीन का तो obviously understandable है. Hasan bowled फिर भी he was better in the first spell. और फिर उसके बाद स्पिनर्स जब आए तो स्पिनर्स का वही जो प्रॉब्लम थ्रू आउट चलता आ रहा है सिंस द एशिया कप, वही लैक ऑफ बॉलिंग इन द राइट एरियाज। एक शॉर्ट बॉल, 4 अच्छी बॉलें कराई, एक शॉर्ट बॉल करा दी, सारा प्रेशर खत्म हो गया। और फिर दीज पिचेस स्पेशली लाइक हैदराबाद के पिच पे देयर इज नो रूम फॉर एरर एट ऑल। कि आप जैसे 4 बॉलें शादाब ने अच्छी कराई हैं, लेकिन वो 5वीं बॉल थोड़ी शॉर्ट कराई, आराम से उस पर चौका पड़ गया, सारा प्रेशर खत्म। So I think lack of bowling in the consistently in the right areas, that was the main issue today as well. Spin भी थोड़ा बहुत और तो हो मैं रहा था। और मैं इसी बात पे तुम्हें सेकंड भी करूंगा कि आई मीन आवर ओनली डिसेंट स्पिनर टुडे वाज इफ्तिखार अहमद। हमारा वो पार्ट टाइम Exactly, स्पिनर है, बट ही वाज गेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज ही वाज बॉलिंग एट द राइट लाइन एंड लेंथ। Yes. exactly. He was bowling consistently in the right areas. I think पहले 2-3 overs के बाद इफ्तिखार was, if you look at the first half of the match, इफ्तिखार was had the best figures amongst all the bowlers. So I एंड think what Shadab is हुसैना, trying to व्हाट आर do योर is थॉट्स? I think what मुझे ये लगता है कि like कि what Shadab is trying to do is like play attacking an attacking role, लेकिन वो उससे हो नहीं रहा क्योंकि वो he was comfortable getting hit for नहीं, पहले वो अपनी लाइन को कंट्रोल करके he wouldn't get hit for runs, but उसे विकेट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, वो ओके इतना इकोनॉमिकल बॉलर था। बट नाउ वी नीड अ अटैक पर कि जो विकेट्स भी लेता है। आई थिंक ही इज ट्राइंग टू अपनी लूज डिलीवरी से करते कि उस बॉल्स पर उसे विकेट मिले, कोई उसे मारने जाए तो उसे विकेट मिले, तो उस वजह से आई थिंक इज वो मुझे जितना लग रहा है, बट आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट देख के मुझे लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू डू दैट। बट अब उसामा मीर को भी ट्राई कर सकते हैं, व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग, क्योंकि लेग स्पिनर्स आर नॉट हैविंग अ गुड टूर्नामेंट। आई थिंक आई सॉ स्टैट जिसमें जैम्पा की भी इतनी बुरे स्टैट्स है, राशिद खान की भी इतनी बुरे स्टैट्स है, तो लेग स्पिनर्स का वैसे ही अभी टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं जा रहा। तो लेट्स उसामा मीर को ट्राई करके देख सकते हैं अगले मैच में। इफ ही डजंट, शदाब इज अ बेटर, तो उस वजह से वी परसिस्ट विद शदाब, बट लेट्स सी। और मतलब जैन खान ने कमेंट किए थे कि उसामा मीर डिजर्व्स टू प्ले। आई थिंक दैट इज वेल, लेकिन मसला ये है कि अगर उसामा मीर को खिलाते हैं वी लूज आवर बैटिंग डेथ। तो थोड़ा सा लव है रिलेशनशिप चल रहा है नवाज और शादाब के साथ, कि अगर वो बॉलिंग में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट लूजिंग देम विल आल्सो मीन लूजिंग आवर बैटिंग डेथ। तो वहां पे और वो एक प्रॉब्लम हमने देखी भी कि अगर रिजवान एंड शादाब सॉरी नवाज एंड शादाब अगर वो रन ना करते नेदरलैंड्स के मैच में, तो आराम से लाइक हम 240 पे गुम थे, तो वो शायद टारगेट ना हो पाता। तो दैट इज व्हाट आई थिंक द डील इज विद उसामा मीर्स इंक्लूजन, के कहीं ना कहीं थोड़ा सा मसला बन जाना था। तो लेट्स कम टू बैटिंग एंड लेट्स कम टू इमामुल हक। सिमिलर फैशन में शॉर्ट बॉल से आउट हुए, क्या सीन चल रहे हैं, बाबर भी आउट होता जा रहा है, हमें स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा टॉप ऑर्डर के अंदर। अपार्ट फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक जो कि अच्छी इंक्लूजन थी, एंड अगर वो फखर होता शायद ये 3 विकेट्स हमारी पहले गिर गई होती, बट थैंकफुली वी हैड अब्दुल्ला हु प्लेड अ क्लासिकल क्लिनिकल इनिंग्स एंड
took us to a comfortable spot, along with Rizwan, of course, and along with South Shakir, and of course, Ifti Mania at the end. So, Husaina, what are your thoughts on the bowling? Okay, bowling, we could say we are persisting with the injured Shine. अगर क्यों खिला रहे हो वसीम जूनियर को ले आओ अगर इतने रन ही खाने तो वसीम जूनियर को डू द सेम थिंग फॉर अस बट वी आर मिसिंग अ फिट शाइन ऑब्वियसली लेकिन हसन अली nobody expected Hasan Ali to bowl like Hasan Ali के उससे भी runs पड़ेंगे but yeah Hasan Ali's comeback I'm all for it I just want his redemption arc तो yeah let's see अगर नहीं हो रहा ना शहीन शाह की फिंगर का कुछ इशू है तो let's just rest him for one match at least but इंडिया के खिलाफ रेस्ट करना मुझे डर भी बहुत लग रहा है but let's नहीं है फिट तो we could do that and obviously fast bowling हारिस रऊफ वो बीच में रन दे देता है बट एंड में ही ऑलवेज कवर्स द बेस्ट डेथ बॉलर फॉर अ रीजन दैट्स माय थॉट्स ऑन द फास्ट तो बॉल तो मतलब बैट्समैन का बताओ ना कि लाइक बाबर आउट होता जा रहा है यार एंड इमाम इज स्ट्रगलिंग। तो अभियान तुम इस पे बताओ यार कि ये व्हाट्स द डील विद इमामुल हक, वो दूसरी दफा शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहा है, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी उसने यही कचरा किया था। तो लाइक कम ऑन। Yeah, I'm not convinced about Imam at all. मैं अगर आज किसी को ड्रॉप करता तो आज इमाम को ड्रॉप करता और फकर को खिलाता उसकी जगह। यार If I was फखर को me on खिलाते the हैं फिर से। यू नो हाँ फिर से फकर भाई। लुक्स रियली जितने स्कोर फकर कर रहा है ना उतने स्कोर इमाम कर रहा है बट फकर एटलीस्ट बाउंड्रीज मार के जाता है तो इमाम पता नहीं बॉल्स खाता है ही डजंट डू एनीथिंग लाइक व्हाट हो सकता है अगले मैच में परफॉर्म भी कर दे बट इमाम doesn't look comfortable फकर जितनी भी रन्स बनाया he looks comfortable I don't know I think he can perform in these pitches अहमदाबाद की पिच में तो पक्का परफॉर्म करेगा फकर if फकर and Abdullah we have the best batting sorry opening pair अगर अगर फकर और इमाम सॉरी फकर और आई थिंक अब्दुल्ला इस साल के ही स्टैट्स अगर आप देख लो तो इट मेक्स नो सेंस फॉर यू टू ड्रॉप फकर instead of Imam because his या strike rate is above 80. He's still averaging I think 40 plus after all of these failures. And he's our Imam on the second other run hand, scorer also he's second yeah, highest run scorer for Pakistan the guy scored doesn't make sense 180 for you just this year. वो team में नहीं आ रहा तो just make it doesn't make any sense ना कि और फिर ये सीन है कि इमाम का ये है कि फकर का आज ही स्टार्ट कोई मेंशन कर रहा था कि 300 प्लस जब भी हम चेस कर रहे होते हैं फकर एवरेज 69 और 68 hmm. and Imam on the other hand if you're chasing 300 plus is I think वो एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स है इसकी where he scored 100 and we won the match. Hmm. Like, and apart from that, I don't remember any innings of his where he scores big while we're chasing down a big score. तो इमाम का आई एम ऑलवेज स्केप्टिकल विद हिम और फिर आज तो फील्डिंग का सबसे बड़ा अफसोस तो मुझे उसकी Feel- फील्डिंग का हुआ वेयर ही ड्रॉप कुसल एट द स्टार्ट एट पॉइंट वो भी इतने मतलब डॉली कैच तो सिर्फ ऑन दैट कैच अलोन आई ड्रॉप हिम तो आई हैव नो फिर और बाद में बाबर ब्लाइंडर भी लिया था जाके बट हाँ बाद में he got a very good catch at the boundary इस पे इंडियंस रो रहे थे कि वो बाउंड्री थोड़ी आगे कर दी है पीछे कर दी है इंडियन पड़ोसियों का चलता रहता है। हाँ नहीं कुछ कुछ इंडियंस तो हाँ इसके अंदर बाबर ऑन द अदर हैंड इफ we keep Imam aside for a second Babar started off his innings with a boundary and a very good boundary so out of form तो Babar बॉबी बिल्कुल नहीं है लेकिन बॉबी का पता नहीं समझ नहीं आता midway through his innings after he plays 10-15 balls he just plays a loose shot or he gets out to a nothing delivery even today down the leg side it was a wide if he missed it and if he were to play it it was an easy four and somehow he got out to that delivery so I think बस I वो लक think नहीं चल he's रही used to having a good opening partnership at the front because Imam and Fakir have been performing for us mostly क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस होते हैं तो दे अच्छा खासा लाइक 50 रन की भी पार्टनरशिप दे के जाते तो he has a platform to build his innings on तो वो थोड़ा सा comfortable होता है I think बाबर को he's a pseudo opener at this point तो I think वो mental block भी होगा बाबर को थोड़ा सा only reason और कैप्टनसी प्रेशर भी मुझे लग रहा है आई थिंक कैप्टन थोड़ी सी आई थिंक वो बेटर कर रहा है कैप्टनसी स्टार्टिंग फ्रॉम द नेदरलैंड्स के मैच के बाद आज के मैच के बाद ही इज डूइंग अ गुड जॉब एट हिज कैप्टनसी आई थिंक कैप्टनसी प्रेशर की वजह से उसकी खुद की परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं हो रहा तो
let's see what आगे के मैच में. I don't think ODI उसका format है. I don't think him ghosting us the whole tournament. A big innings has to come. बिल्कुल ऐसा ही है. एंड फील्डिंग की तुम लोगों ने बात की थी, जिस तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में विराट कोहली कैच कॉस्टेड ऑस्ट्रेलिया दोस 2 पॉइंट्स. आज भी ऑलमोस्ट कुशल मेंडिस का वो कैच जो है ना हमें बहुत भारी पड़ने वाला था. एंड यू डू नॉट ड्रॉप कुशल मेंडिस. I mean, whatever Sri Lanka's form is going right now, Kusal Mendis is the dangerous batsman. उसकी परफॉर्मेंस देख लो पूरे क्वालिफायर टूर्नामेंट में. He was the guy. So yeah, you don't miss field like that, especially in World Cups. But all is well that ends well, I guess. But I think हमें इस चीज से भी निकलना चाहिए कि हम एंड पे ये कह के छोड़ जाते हैं और पिछली चीजें इंप्रूव होती ही नहीं है. बट इम्प्रूवमेंट की बात आते हैं और इंजरी स्केयर्स पे आते हैं कि यार जिस तरह रिजवान का काफी वो हार्ट अटैक दे गया यार बहुत सारे अपनी इनिंग के टाइम पे. लाइक 90s के अंदर शायद उसको अपनी क्रैम्प्स पड़ रहे थे, पता नहीं क्या था. तो आई थिंक 80s हुसैना, 80s में स्टार्ट हो गया था. ओके सो हुसैना, तुम्हारे क्या थॉट्स है उस टाइम पे? कि I wanted him कि वो चला जाए बाहर क्योंकि he has already done his job. We don't have a backup wicket keeper. What will we do? अगर ये injured हो जाता है, but he is Rizwan, he's Superman. वो ICU से अगले दिन आके मैच खेल सकता है, तो he could do anything. He's unexplainable. He's beyond science. I don't know how to explain this man. He's just. वो सईद अजमल की लाइन याद आती है, साइंस इज द मैन. और क्या है, रिजवान इज दैट मैन. या ये वाकई तुम लोगों ने सही बात किया. अभियान यार तुम्हारा वैसे लगता है ये एक ही लाइन में फिट बैठता है कि साइंस इज द मैन एंड मैन कैन डू एनीथिंग. Yeah, man वही can वाला do हिसाब है. anything. मतलब यार द गाय वाज क्रैम्पिंग अप एट 80 और फिर ही स्टिल परसिवियर्ड. आई थिंक एम्पायर भी उसको एक वक्त पे कह रहा था कि भाई यू आर टेकिंग टू मच टाइम, आप अगर जाना चाहें तो चले जाएं. मैंने बोला मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं मैच खत्म करके ही जाऊंगा. सो एक पंप पे छक्का मार लो उठ के तो आई डोंट कुछ भी कर सकता. exactly, and the commentators were having a ball as well. यार They were joking. That was rude. That was really rude. But I mean, thought it was Rizwan's- rude as well. मतलब the guys cramping up and like Waqar Yunus of all people had to intervene and say कि it's very painful. I think बाकी Hayden थे और there's a third guy who sounds very eerily similar to Shane Warne. ये कौन सा commentator है? Have you guys noticed? I wasn't focusing on commentary that time. I was actually at a restaurant. वो मैं स्टोरी सुनाऊंगा बाद में. लेकिन यार I mean मैं भी यही कहता हूँ कि रिजवान को चले जाना चाहिए था. बट आई एम स्केप्टिकल कि उसके बाद हम रन चेज वो कर पाते या नहीं. बाकी बात हमारी ठीक है कि यार वी हैव टू सी कि यार ये टूर्नामेंट्स. यार कमेंटेटर्स पे अगर तुम कह रहे हो तो लास्ट टाइम भी एक बड़ा रेसिस्ट किस्म का वर्ड यूज किया था पाकिस्तान की कमेंट्री के टाइम पे, इफ यू रिमेंबर. लाइक yeah, they What's use a that? derogatory term. It was a term that During this World Cup, right? Practice matches में हुआ था या कुछ? warm-ups, yes. Warm-ups. क्योंकि मुझे याद है वो कमेंटेटर ने वो बड़ा ही रेसिस्ट टर्म यूज की थी. एंड इट डज हैपन, बट वी कैन आल्सो से कि यार वो थोड़ा फ्रेंडली बैंटर में उसको कर रहे थे. ऑब्वियसली नियतों का किसी का हमें क्या पता, वी डोंट नो व्हाट्स इनसाइड देयर हार्ट्स. हाँ, रेसिस्ट टर्म का मैं बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जस्ट फॉर क्लियरिंग इट अप. बाकी वो ये क्रिस्टा ने भी ये ट्वीट की थी कि रिजवान को आगे भी मैचेस खेलने हैं एंड इट लुक्स अ बिट लाइक स्कैरी टू सी हिम स्ट्रगलिंग लाइक दैट. बिल्कुल एक पाँव पे वो गिर गया छक्का मारने के बाद, उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहा था. एम्पायर्स भी आके उसको कह रहे थे कि भाई तू चला जा. वो रुक के देख लेते एंड दे वर नॉट हैविंग इट. यार तुम इस तरह इंजर्ड यहाँ पे खड़े हो के लाइक. बट रिजवान परसिवियर्ड एंड फॉर दैट आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. कि वो अगर वर्क एथिक किसी से सीखना है ना पाकिस्तान के अंदर, अगर वर्क एथिक किसी से सीखना है, दैट्स रिजवान. So, I have been watching that guy since Peshawar Panthers days. अगर तुम लोगों को याद हो एक फैसल बैंक T20 टूर्नामेंट होता था और उसके अंदर सियालकोट स्टैलियंस ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया बनी हुई. OG. ठीक है. Sialkot Stallions OG. हर फाइनल से सियालकोट स्टैलियंस लाइक और हर फाइनल में आते थे किसी तरह और जीत के जाते थे. यार हर दफा जीतते थे. उनके आधे से ज्यादा प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे. हारिस सोहेल हो गया, शुएब मलिक हो गया और न्यूमरस अदर पीपल.
उस वक्त नहीं, it was Shoaib Malik and bunch of first class cricketers who somehow made the finals. कराची किंग्स में मुझे याद है सारे पाकिस्तान खेले हुए होते थे, लाहौर लायंस में पाकिस्तान खेले हुए होते थे, लेकिन somehow it would be सियालकोट स्टैलियंस in the finals और फिर जीत के भी जाते थे. शोएब मलिक था, उसका भाई था आई थिंक अदील मलिक, हारिस सोहेल hadn't played then, और एक को इनका हिटर आ जाता था सियालकोट से and somehow they would win the tournament. वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही बट सीन था. बट जिस तरह रिजवान पिशावर पैंथर्स बॉय में कौन कौन था? रिजवान था वहां पे, उसके अलावा एक ताज वली एक बंदा होता था, मूसा मोहम्मद मूसा एक होता था, इमरान खान एंड था, एक इमरान खान था. इमरान खान जूनियर, इमरान खान सीनियर भी इमरान एक खान हुआ करता था यार. इमरान खान बहुत सारे हैं कि वो कौन सा जूनियर था और कौन सा सीनियर था. यार जूनियर मैं जो बताता था, हूँ, जूनियर हमारे लिए श्रीलंका में खेल चुका था, वो जो क्या कहते हैं फास्ट बॉलर था. लेफ्ट आर्मर था, स्लोअर वंस कराता था बड़ी अच्छी. और हाँ, सीनियर वन जो सीनियर था ना, वो स्लोअर वन बहुत बहुत अच्छी कराता था. ही नहीं वाज नहीं, द जूनियर वन वाज द वन हु वाज अ लेफ्ट आर्मर, वो स्लोअर वन बड़ी अच्छी कराता है टी20 में. सीनियर तो उसकी बात कर रहे हैं ना जो हमारे टेस्ट भी खेले हैं. हाँ हाँ, उल्टा कर रहे हो. जो उस टाइम पे मैं क्लियर करता जाऊँ, उस टाइम पे जो टीम में सीनियर इमरान खान था वो लेफ्ट आर्मर था, वो जो स्लोअर वन बहुत अच्छी कराता था. एंड जो जूनियर था वो हमारे लिए टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, एंड ओडीआईस भी कुछ ना कुछ खेला ही हुआ है. एंड आई गेस द सीनियर वन प्लेड T20 मैचेस फॉर अस एज वेल. बट द थिंग इज कि रिजवान उस टाइम से ही बहुत अच्छा खेल रहा था. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन, कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में एंटर हुआ था और काफी मीम्स बनती थी इसके ऊपर, बट द वर्क एथिक दैट गाय हैज, एंड जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, उसने गेम उठाई है, और उसका यही वर्क एथिक है कि यार लूला लगना हुआ है, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, अगले दिन आके खेल रहा है, परफॉर्म करके जा रहा है, मैन ऑफ द मैच बन के जा रहा है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फॉर मोहम्मद रिजवान. तो any parting thoughts from you guys? Anything that Pakistan cricket team can improve in the next match? मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच शायद इंडिया के साथ है हमारा, अहमदाबाद के अंदर. तो Yes. एक तो इमाम को पॉइंट पे that's खड़ा ना करें, फील्डिंग शादाब से अच्छी कर ले, स्टार्ट करें. फील्डिंग अच्छी कर ले, लाइक बेटर इन द फील्ड. यस. And I think the new ball bowling, spinners का तो चलो we've seen, I think spinners का we've seen कि they regained some form in the Netherlands match. लेकिन new ball bowling in the Netherlands match as well as this match has been a concern. Length से ये लोग सही hit नहीं कर पा रहे. आज तो because of Shaheen की injury, I don't know why they persisted with him today. आज अगर injury का इतना ही मसला था तो they could have played Wasim. So the pace was also down. और हसन अली की भी शुरू में the pace is a bit down. So it was like the Shaheen 130s का bowling attack आ रहा था, और वो भी सही जगह पे bowling नहीं कर रहा था. Easy runs for them. शाहीन का थोड़ा सा कंसर्निंग है. आई होप कि इट्स नॉट अ सीरियस इंजरी, क्योंकि पेस चली गई है, तो दैट्स आई थिंक द फर्स्ट साइन ऑफ an injury. The pace was back in the second half. Hope He did bowl Yeah. 137, 138 in the second half. लेकिन But new उस ball. injury के साथ persist करना is, especially in a match Risky. like this. And we have a month-long tournament. I guess. And we have a bigger match coming up as well. Have to think. ओके. तो यार बहुत सारी चीजें हैं जो कि सही होने वाली हैं. आई होप सो कि ये है इसका क्या कहते हैं भरम नहीं जाने देंगे बॉयज. बाकी इट वाज लवली टू टॉक टू यू गाइस टुडे इन दिस लाइव स्ट्रीम, एंड आई होप कि 14 अक्टूबर की रात को भी हम इस तरह लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे विद हैप्पी फेसेस. आई होप सो इंशाल्लाह. बाकी see you guys that day, see you guys in the next matches as well. तो I see you guys as well. ये तुम लोग देख रहे हो ना बाकी सारे लाइव स्ट्रीम, ये मैं तुम लोगों से भी मिलता हूँ इंशाल्लाह जल्दी. हम सब मिलेंगे. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और माय ट्विटर हैंडल को जाके फॉलो कर दो यार. हुसैना हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट. हुसैना एंड अहमद, shout out to Ahmed, he has not been here but we hope that he soon will be. See you guys in the next one. Allah Hafiz. Laugh us. Office everyone.